Hello dear students, today definite integration exercise 4.2. Question number 2nd, continue. Evaluate the following. Sub question 11th. Let I equal to integral of 0 to 1 square root of 1 minus x upon 1 plus x into dx. So for this integral, you have to substitute x equal to cos theta. Why we substitute x equal to cos theta? How will you know? Put x equal to cos theta. This is the main problem for the students. How will you understand? What should we put here? So it is integral of the type square root of 1 minus x upon 1 plus cos x. So you have a formula 1 minus cos 2 theta equal to 2 sin square theta and 1 plus cos 2 theta equal to 2 cos square theta. So cos formula gives both minus and plus. So we should substitute here x equal to cos theta, or you can say x equal to cos of 2 theta. So for both you can solve this question. So we put here x equal to cos of theta. Now differentiating with respect to x on both sides, we get dx equal to minus sin theta d theta. How? Derivative of x is 1 and derivative of cos theta is minus sin theta into d theta by dx. So taking dx on the left hand side, so we get 1 into dx equal to minus sin theta into d theta. Now according to new substitution, we should change the given limit. When x equal to 0, then theta equal to what? When x equal to 0, then cos theta equal to cos of pi by 2, because cos 90 degree equal to 0. So therefore theta equal to pi by 2. When x equal to 1, then cos theta equal to cos of 0. Therefore theta equal to 0. So we get new limits pi by 2 to 0 and value of dx equal to minus sin theta into d theta. Therefore, I equal to integral pi by 2 to 0 square root of 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, because x equal to cos theta, and value of dx minus sin theta into d theta. Now 1 minus cos theta is 2 sin square theta upon 2, half angle formula, and 1 plus cos theta equal to 2 cos square theta upon 2. Here minus sin theta d theta, if we interchange the limit, so integral becomes opposite in sign. तो यहाँ पर देखो ये इंटीग्रल यहाँ पर क्या है, दिस इज माइनस ऑफ समथिंग, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस विल बी आउट. सो इफ वी इंटरचेंज द लिमिट, सो इंटीग्रल बिकम्स पॉजिटिव. So we take here integral 0 to pi by 2 square root of 2 sin square theta upon 2 cos square theta upon 2 into sin theta d theta. Now 2 going by 2, sin square theta upon 2 upon cos square theta upon 2 in the square root. So we get integral of 0 to pi by 2 into sin theta by 2 upon cos theta by 2. And using sin theta formula in terms of half angle, so we get 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 into d theta. Now cos theta by 2 get cancelled. So we get here 2 sin theta into 2 sin theta by 2. So sin theta by 2 into 2 sin theta by 2 becomes 2 sin square theta upon 2 into d theta, and integral 0 to pi by 2. So I equal to integral 0 to pi by 2. Here 2 sin square theta upon 2 is 1 minus cos theta. We used here, देखो 1 minus cos theta equal to 2 sin square theta upon 2. So same formula using here again. 1 minus cos theta is 2 sin square theta upon 2, or you can say 2 sin square theta upon 2 equal to 1 minus cos theta into d theta. Now integrate each term separately. So integral of 1 d theta is theta, limit 0 to pi by 2, minus integral of cos theta d theta is sin theta in limit 0 to pi by 2. Now taking limit, therefore I equal to, first we substitute upper limit and then lower limit. So here it is pi by 2 minus 0 minus sin theta 0 to pi by 2, that is sin pi by 2 minus sin 0. Here pi by 2 as it is, minus 0 meaningless, and sin pi by 2 is 1, here sin 0 is 0. So we get pi by 2 minus 1. So therefore I equal to pi by 2 minus 1. Next one, 12th question. Let I equal to integral 0 to pi sin cube x into 1 plus 2 cos x into 1 plus cos x the whole square into dx. So we see that maximum terms are for cos x, but sin cube x can be written as sin square x into
साइन एक्स, देखो एक साइन एक्स मैंने इसका यहाँ पर रखा है और साइन स्क्वायर एक्स कहाँ पर है, ये दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 into 1 plus 2 sin x cos x as it is, 1 plus cos x whole square as it is into dx. Now all the terms converted in terms of cos, only one term is remaining in sin. So we put cos x equal to t, therefore differentiating with respect to x on both sides we get minus sin x into dx equal to dt. Therefore sin x into dx equal to minus dt, taking minus sign on the right hand side. Now we change the limit also. When x equal to 0, then t equal to cos of 0, that is cos 0 is 1, so t equal to 1. When x equal to pi, when x equal to pi, so t equal to cos pi, therefore t equal to minus 1, because cos pi is minus 1. So cos 0 is 1 and cos pi is minus 1, so our new limit is 1 to minus 1. So we write integral in terms of t, therefore I equal to integral 1 to minus 1, 1 minus t square into 1 plus 2t into 1 plus t whole square into minus dt. So again in this question here minus sign, so if we take here minus sign out and interchange the limit, so we get positive integral again, it will be positive. So therefore I equal to, now interchange the limit, so negative sign becomes positive. So minus 1 to 1, 1 plus 2t in minus t square minus 2t cube, multiplying these two brackets. And square of 1 plus t is 1 plus 2t plus t square into dt, using a plus b whole square formula. Clear? So after that, multiplying these two brackets again, we get integral minus 1 to 1. Now multiply by 1 to all the four terms. So 1 into 1, 1 into 2t, 2t, 1 into minus t square, 1 into minus 2t cube, minus 2t cube. So 2t into each. 2t into 1 plus 2t, 2t into 2t, 4t square, and 2t into minus t square minus 2t cube, and 2t into minus 2t cube becomes minus 2t raised to 4. Sorry, 2t into minus 2t cube, so minus 4t raised to 4. Now last one, t square into each, t square into 1 plus t square into 2t plus 2t cube, and t square into minus t square minus t raised to 4, t square into minus 2t cube is minus 2t raised to 5, bracket closed, dt. Now simplify. Here only one constant in whole statement, that is 1 only. So integral of minus 1 to 1, a bracket here, and then 1 plus 2t plus 2t becomes 4t, and here minus t square, this one, and plus t square get cancelled, then only plus 4t square is remaining, minus 2t cube as it is, because plus 2t cube and minus 2t cube cancelled. Here it is t raised to 4 terms, minus 4t raised to 4 and minus t raised to 4 becomes minus 5t raised to 4, and last one minus 2t raised to 5 whole dt. Now it is simplest form of the above statement. So I equal to integrate each term separately. Integral of 1 t, integral of 4t, 4t square by 2, integral of 4t square, 4t cube upon 3, integral of 2t cube, 2t raised to 4 upon 4, integral of 5t raised to 4, 5t raised to 5 upon 5, and integral of 2t raised to 5 is 2t raised to 6 upon 6, bracket closed, limit minus 1 to 1. Sign will be same, जो भी sign ऊपर है same sign will be down. Now taking upper limit for all, first we put t equal to 1, so we get here, देखो t equal to 1, that is 1, here t is 1, so 4 by 2, that is 2, here t equal to 1, that is 1 cube, 1, so 4 upon 3, minus 2, 1 raised to 4, that is 1 upon 4, so 2 by 4 becomes half. Now it is minus of, then 5 upon 5 get cancelled, 1 raised to 5, that is 1, and here
1 raised to 6 1, so 2 upon 6 becomes 1 by 3. So this is for upper limit, first bracket for the upper limit only. Now minus, क्योंकि अपर लिमिट के बाद क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो माइनस साइन हियर फ्रॉम द फॉर्मूला, देन अनदर ब्रैकेट using t equal to minus 1. So it is minus 1, then 4 upon 2 into minus 1 square, that is plus 2, and 4 into minus 1 cube upon 3, so this becomes minus 4 by 3, and here minus 1 whole raised to 4, so here 2 by 4, that is half, minus half, and it is minus 1 raised to 5. So minus 1 and here 5 get cancelled, so minus minus plus, that is plus 1, and here minus 1 raised to 6 is plus 1, so minus 2 by 6 becomes minus 1 upon 3. Now simplify each bracket separately and then final answer. So solving all these terms, we get in the first bracket 5 upon 2, and solving all these terms we get minus 1 upon 6. So I equal to 5 upon 2 and here minus minus plus, that is plus 1 upon 6. So make the same denominator multiplying by 3 in numerator and denominator here. So 3 5 are 15 and here 3 into 2 6. So 15 by 6 plus 1 by 6 becomes 16 upon 6, and simplify we get 8 upon 3. इसको 2 से divide कर दोगे both, we get 8 upon 3. So I equal to 8 upon 3. Next one, 13th question. I equal to integral 0 to pi by 2 sin 2x into tan inverse sin of x into dx. So for this integration, first we apply sin 2x formula. So I equal to 0 to pi by 2 sin 2x is 2 sin x cos x into tan inverse sin of x into dx. Put sin x equal to t and differentiating with respect to x on both sides, we get cos x into dx equal to dt. Put x equal to 0. When x equal to 0, then t equal to sin 0, that is t equal to 0 because sin 0 is 0. When x equal to pi by 2, so t equal to sin pi by 2, but sin pi by 2 is 1, so t equal to 1. Therefore, I equal to integral 0 to 1 into sin क्या है t, तो 2t, और देखो cos x into dx से dt में कन्वर्ट हो चुका है, तो 2t into tan inverse t, so 2t into tan inverse t into dt, and new limit 0 to 1. Now 2 is constant, taken out, integral of 0 to 1 tan inverse t into t dt according to Liet rule. तो यहाँ पर हमने Liet rule अप्लाई कर दिया, तो इनवर्स टर्म फर्स्ट आना चाहिए, तो tan inverse t into t dt. Now integrating by parts, that is integral of u into v dx. So 2 as it is into tan inverse t into integral of 0 to 1 t dt minus integral of 0 to 1 bracket here, differentiation means derivative of tan inverse t into integral of t dt whole dt, bracket closed. क्योंकि देखो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑल टर्म्स है, इसके लिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज करना नहीं भूलना है. So I equal to 2 multiplied by tan inverse t, integral of t is t square upon 2 whole limit 0 to 1 minus integral 0 to 1 d by dt of tan inverse t is 1 upon 1 plus t square, it is a formula, integral of t dt t square upon 2 into dt. Now 2 as it is in the bracket half tan inverse 1 minus, देखो 1 square is 1, तो 1 by 2, that is 1 by 2 into tan inverse 1 upper limit minus 0 into something all of 0, so minus 0 minus this 2 into, देखो एक 2 यहाँ से है, 2 multiplied by 1 upon 2, that is 2 upon 2 integral 0 to 1, here t square into 1 is t square only upon 1 plus t square, so t square upon 1 plus t square into dt. So adding 1 and subtracting 1 in the numerator. So adding subtracting 1 in the numerator, we get 1 plus t square minus 1 upon 1 plus t square into dt. Now separate it. So 1 plus t square upon 1 plus t square is 1 and minus 1 upon 1 plus t square into dt. So I equal to pi by 4. देखो ये पूरा सॉल्व कर लिया. tan इनवर्स क्या होता है? pi upon 4. So tan inverse 1 is pi upon 4. Here 2 going by 2. So pi upon 4 minus 0, that is pi by 4. Minus 2 going by 2. Integral of 0 to 1. Here 1 plus t square upon 1 plus t square is 1
minus 1 upon 1 plus t square into dt. Now integrate these two terms. So I equal to pi by 4 as it is minus integral of 1 dt, that is t, minus integral of 1 upon 1 plus t square dt tan inverse t, and limit 0 to 1. Therefore I equal to pi by 4 minus taking upper limit, so we get 1 minus tan inverse 1, but tan inverse 1 is pi by 4, so we get 1 minus pi by 4 minus 0 minus 0, that is 0. Simplifying, we get pi by 4 as it is minus 1, and here minus minus plus, that is plus pi by 4. So pi by 4 plus pi by 4 becomes pi upon 2 minus this 1 as it is. So I equal to pi by 2 minus 1. Or you can say pi minus 2 entire upon 2. Both are correct answers. So according to the multiple choice or theoretical question, you can check your answer and you should write that final answer. So I equal to pi upon 2 minus 1. Now see next one, question number 14. This is very important question. So I equal to integral of 1 by root 2 to 1 e raised to cos inverse x into sin inverse x entire upon root of 1 minus x square into dx. So for this question, first we put sin inverse x equal to t and differentiating with respect to x on both sides, we get derivative of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square equal to dt by dx. So taking dx on the left hand side, so we get 1 upon under root 1 minus x square into dx equal to dt. अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो 1 अपॉन मीन्स dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना पार्ट ये कन्वर्ट हो गया किसमें, dt में. ये साइन इनवर्स x को हमने t लिया है, ये t हो गया, बट e रेज टू cos इनवर्स x ये रिमेनिंग रह जाता है. ठीक है, तो e रेज टू cos इनवर्स x, तो हमें cos इनवर्स x को भी t के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. तो वी हैव अ फॉर्मूला sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. It is a formula. Therefore cos inverse x equal to pi upon 2 minus sin inverse x. तो यहाँ से sin inverse x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t, तो ये हो जाएगा pi by 2 minus t. तो इसके लिए हम cos inverse x की वैल्यू क्या लिखेंगे, pi upon 2 minus t. अब रह गया हमें लिमिट चेंज करने के लिए, तो व्हेन x इक्वल टू 1 बाई रूट 2, फिर से यहाँ पर आइए, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू t, बट साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4, तो साइन साइन एलिमिनेटेड, तो t इक्वल टू पाई बाई 4. क्लियर. व्हेन x इक्वल टू 1, तो साइन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 2, t इक्वल टू पाई बाई 2. तो अपने पास टू न्यू लिमिट्स आ गए, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2. देखो मैंने इसको जिग जैग लाइन से थोड़ा अंडरलाइन कर दिया है, t इक्वल टू पाई बाई 4, t इक्वल टू पाई बाई 2 एंड cos इनवर्स x इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस t. ये थ्री वैल्यूज हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं. और दूसरा चीज यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी. तो अभी हम ये अगर देखते हैं तो हमारा होल क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे जो न्यू लिमिट्स हैं वो भी टी के अकॉर्डिंग आ चुके हैं. तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, लोअर लिमिट पाई बाई 4, अपर लिमिट पाई बाई 2, ई रेज टू पाई बाई 2 माइनस टी इंटू टी डी टी. क्लियर. क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो हमारा पार्ट है ये क्लियर कट, यहाँ पर लिमिट हमारे चेंज हो गए और ये आ गया पाई बाई 4, यहाँ पर पाई बाई 2, यहाँ हो गया ई रेज टू पाई बाई 2 माइनस टी, और ये टी हो गया और ये पूरा पार्ट यहाँ तक ये डी टी में कन्वर्ट हो चुका है. तो वही हमें यहाँ पर लिखना होता है, बाकी कुछ नहीं है. सो आई इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 ई रेज टू पाई बाई 2 माइनस टी इंटू डी टी. Now, according to indices rule, we should break it. So, integral pi by 4 to pi by 2 into e raised to pi upon 2 into e raised to minus t into t dt. So, e raised to pi upon 2 is constant here, so taken out. So, I equal to e raised to pi upon 2 into integral pi by 4 to pi by 2 into t into e raised to minus t into dt. So, according to लिएट रूल, अभी हमें यहाँ पर लिएट रूल फॉलो करना है, तो एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में होता है, इसके लिए मैंने यहाँ इंटरचेंज किया है. तो t इंटू ई रेज टू माइनस टी डी टी. नाउ इट इज प्रॉपर फॉर्मेट. तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, दैट इज इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स फॉर्मूला. तो i इक्वल टू ई रेज टू पाई बाई 2, दिस ई रेज टू पाई बाई 2 इज कॉन्स्टेंट, सो एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाई
टी, अब यहाँ से हमारा u इंटू वी रूल स्टार्ट होता है, तो t इंटू इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 ई रेज टू माइनस टी डी टी माइनस इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 ब्रैकेट डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू माइनस टी इंटू डी टी ब्रैकेट क्लोज्ड एंड देन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट मेन ब्रैकेट इज क्लोज्ड फॉर ई रेज टू पाई बाई 2, जिसका मल्टीप्लिकेशन ये ब्रैकेट आउटर ब्रैकेट शो करता है. So I equal to e raised to pi by 2 into t as it is integral of e raised to minus t dt is e raised to minus t upon minus 1 because coefficient of t is minus 1 whole limit pi by 4 to pi by 2 minus integral of derivative of t is 1 integral e raised to minus t dt my e raised to minus t upon minus 1 into dt. So I equal to e raised to pi by 2 into देखो माइनस साइन हियर, तो माइनस इज आउट टी इंटू ई रेज टू माइनस टी होल लिमिट पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 माइनस, अब यहाँ देखो एक बार तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, बट इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू माइनस टी इज ई रेज टू माइनस टी अपॉन माइनस 1, सो इट इज अगेन माइनस, तो माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस टी होल लिमिट पाई बाय 4 टू पाई बाय 2. तो यहाँ पर आकर के हमारे इंटीग्रल के सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, बट टेकिंग द लिमिट, अभी लिमिट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस स्टेप के बाद हमें बहुत ही केयरफुली सभी लिमिट्स यूज कर लेने चाहिए और सिंप्लीफाई करना चाहिए. तो ई रेज टू पाई बाय 2 अभी इसको बाहर ही रखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय देखो माइनस साइन एज इट इज टेकिंग अपर लिमिट, सो पाई बाय 2 इंटू ई रेज टू माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 इंटू ई रेज टू माइनस पाई बाय 2 माइनस नाउ लोअर लिमिट पाई बाय 4 इंटू ई रेज टू माइनस पाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज्ड फॉर द फर्स्ट टर्म माइनस फॉर द सेकंड टर्म ई रेज टू माइनस पाई बाय 2 देखो अपर लिमिट रख दिया गया माइनस ई रेज टू माइनस पाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज्ड. तो इक्वल टू, अब क्या करते हैं ई रेज टू, पहले तो यहाँ पर ई रेज टू पाई बाय 2 का मल्टीप्लाई सभी टर्म में कर देते हैं, तो चलो ई रेज टू पाई बाय 2 तो इंटू ई रेज टू पाई बाय 2 इंटू ई रेज टू माइनस पाई बाय 2, तो ये देखो माइनस पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट e raised to pi by 2 into e raised to minus pi by 2, तो प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 बिकम्स 0, e raised to 0 हो गया, प्लस e raised to pi by 2 into e raised to माइनस पाई बाय 4, और देखो यहाँ पर पाई बाय 4 एक कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो पाई बाय 4 इंटू ई रेज टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, जो कि बेस सेम है, तो इंडाइसिस रूल के अकॉर्डिंग हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी है, तो ई रेज टू माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ये प्लस पाई बाय 2 और यहाँ से माइनस पाई बाय 2, ये फाइनली कट होकर के ई रेज टू 0 हो जाएगा जो यहाँ पर लिखा गया, प्लस ई रेज टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी है. ठीक है, चलो ई रेज टू 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो माइनस पाई बाय 2 इंटू 1 दैट इज माइनस पाई बाय 2 प्लस ई पाई बाय 4 और यहाँ पर e raised to pi by 2 minus pi by 4 that is e raised to pi by 4 minus here minus pi by 2 plus pi by 2 get cancelled, e raised to 0 and subtracting here we get e raised to pi by 4. Therefore I equal to pi by 4 into e raised to pi by 4 plus e raised to pi by 4, ये दोनों टर्म हमारे कैसे हैं e raised to pi by 4 से रिलेशन रखते हैं, तो इन दोनों को एक साथ ले लिया, माइनस पाई बाय 2 और e रेज टू 0 की वैल्यू क्या होगी 1, सो यहाँ पर हो गया माइनस 1. नाउ e रेज टू पाई बाय 4 कॉमन, e रेज टू पाई बाय 4 कॉमन हियर, so we get pi by 4 plus 1, minus sign common in these two terms we get pi by 2 plus 1, so therefore I equal to e raised to pi by 4 into pi by 4 plus 1 minus ब्रैकेट pi by 2 plus 1 ब्रैकेट closed. तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा फॉर क्वेश्चन नंबर 14. So this is very important question for the multiple choice question, JEE, Advanced or CET as well as for board exams. Now see question number 15. Let I equal to integral 2 to 3 cos of log x upon x into dx. So here it is cos of log x upon x into dx. This question is very simple. फॉर देखो अगर हम ओरली यहाँ पर ऐसे थिंकिंग करते हैं डिस्कस करते हैं तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, सिंस डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, तो बेटर वी पुट log x इक्वल टू t
and differentiating with respect to x on both sides. We get derivative of log x is 1 by x. Here it is dt by dx. Taking dx on the left hand side, so we get 1 upon x into dx equal to dt. When x equal to 2, so t equal to log 2. When x equal to 3, यहाँ पर 3 रखोगे तो t equal to क्या मिलेगा, log of 3. तो न्यू लिमिट becomes log 2 to log 3. तो therefore I equal to log 2 to log 3, और हमने इसको t पुट किया है तो cos of t और dx by x क्या हो चुका है, dt. फ्रॉम हियर देखो dx upon x becomes dt. तो इंटीग्रल ऑफ log 2 to log 3 cos t dt. Now integrate it. Integral of cos t is sin t, limit log 2 to log 3. Therefore I equal to sine of upper limit, that is sine of log 3, minus sine of lower limit, that is sine of log of 2. Therefore I equal to sine of log 3 minus sine of log 2. So dear students, आज के लेक्चर में till question number 15 means main question number 2 completed now from 1 to 15 questions, and question number 1 is already uploaded from 1 to 15 questions. So for the remaining questions and remaining exercises देखते रहिए हमारे coming videos. Thank you.